हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मैं हूं रश्मि और इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर से डिस्कस करेंगे। इसका जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चैनल पे उसको देख लेंगे। और अभी हम लोग गेस्ट पेपर से इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए मेस्टिगोट फॉर्म ऑफ लेशमैनिया डोनोवानी इज यूजुअली फाउंड इन ह्यूमन मैक्रोफेग। लेशमानिया डोनोवानी belongs to Mastigophora. Leptomonad stage in the life cycle of Leishmania donovani occurs in gut of sandfly. Ant amoeba histolytica was first discovered by Lambel. Ant amoeba histolytica infection occurs through contaminated water and food. Infective stage of Ant amoeba histolytica is tetranucleate cyst. Ant amoeba histolytica is found in man in colon. Ant amoeba histolytica is more common in tropical and subtropics. Ant amoeba histolytica is different from amoeba in absence of contractile vacuole. The infective stage of Ant amoeba histolytica is mature cyst. In Ant amoeba histolytica, infective stage is tetranucleate. Which of these stages in Ant amoeba histolytica is infective? सिस्टिक स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ Ant amoeba histolytica is minuta form. Ant amoeba histolytica differs from amoeba in absence of contractile vacuole. The number of amoebulae produced by a single cyst of Ant amoeba histolytica is 8. The intermediate host in the life cycle of Ant amoeba histolytica is mosquito. And amoeba dysentery is caused by Ant amoeba histolytica. The food vacuole of Paramecium is only alkaline. अब नेक्स्ट टॉपिक है पोडीफेरा। इसका क्वेश्चन देखते हैं। Members of phylum Porifera are mostly marine animals, but few are freshwater entities, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। Poriferan evolution from protozoans is evidenced by animals such as, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रोटेरोस्पोंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन जनरली स्पाइक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल कैविटी ऑफ द स्पॉन्ज इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रल कैविटी. One of the characteristic feature of the sponges is presence of choanocytes. Sponges capture their food by choanocytes. Path of water in a sponge is ostia to spongiocele and then osculum. The skeleton in sponges is composed of spicules. Next, larva of a sponge is known as amphiblastula larva. Which of the following statement is true of sponges? Option C, innumerable mouths and one exit, यानी कि बहुत सारे माउथ होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको कि ऑस्टिया बोलते हैं, और एक एग्जिट होता है जिसको कि ऑस्क्यूलम बोलते हैं।
Next, bath sponge belongs to Demospongy. Sponges are not found in cold water. Water current through the body of sponges is maintained by choanocytes. Water exits from a sponge through the osculum. The skeleton of sponges is mostly composed of scleroblast. Nervous system in sponge is absent. The gametes in a sponge develop from archaeocytes. The common bath sponge belongs to Euspongia, which is not a larva of sponge, planula. Central cavity in a sponge is spongiocele. The working of canal system is controlled by one of the following cell in a sponge, that is pinacocytes. Next, canal system is characteristic feature of sponge. The body organization of a sponge is at cellular level. Most important of physiology in a sponge is choanocyte. The cells that serve the purpose of connective tissue in a sponge are collinocytes. The simplest type of canal system in Podifera is known as Ascon type. Freshwater sponge is Spongilla. A sponge is a coelomate. The animal nature of a sponge was established by Elias. Exogenous budding, a type of asexual reproduction in sponges, is known as gemulation. Sponges are multicellular organisms with their cells arranged in two layers. In sponges, the spicules are formed by scleroblast. Most of the sponges are cold water inhabitants. The exit of a sponge is known as osculum. Many sponges may be bigger than fishes, yet the sponges Many sponges may be bigger than fishes, yet the sponges have no respiratory organ because they have highly porous body. Gemule of a sponge is internal bud. तो ये स्पॉन्ज टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निडेरिया को कंटिन्यू करेंगे. तो बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स या फिर उसके जो भी टॉपिक्स हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के या फिर पार्ट 3 के, तो इस सारे रिलेटेड टॉपिक के जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.